So in how many ways can persons A, B, C, D and E be arranged in a line? अगर हम उन लेटर्स को बदल दें, चेंज कर दें, तो क्या उनकी अरेंजमेंट भी चेंज होगी? बिल्कुल चेंज होगी. क्यों? क्योंकि all letters are different, right? So when they're changed, the arrangement changes. So इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है that the order of the items matters. A permutation is the arrangement of n items where order matters. But what if हमें उनको एक circular way में arrange करना हो, right? So this type of arrangement is called a circular arrangement, where simply it's how we arrange this in a circular fashion. But to understand this, let's take an example of Mr. Ahmed and his family who have gone to a restaurant to have dinner. Okay? It's Mr. Ahmed, his wife, his 2 sons and a daughter. So let's say they all have to sit at a circular table. Will the arrangement change? Or what will the arrangement be? Let's find out. Now let's say they have to sit at a circular table. In how many ways can 5 people be arranged in a circle? Now let's see here. So let's say this is our starting position. Okay? This is how they look like on the table. And let's say इस पोजीशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं. अब हम इसको जब रोटेट करके देखेंगे तब हम देखेंगे कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं हमारे पास. लेट्स रोटेट इट वंस. नाउ वी हैव अ डिफरेंट पर्सन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. कैन यू सी? या अब हम एक और दफ़ा इसको रोटेट करते हैं तो यू कैन सी कि अब एक और बंदा आ गया है, इसमें डिफरेंट पोजीशन आ गई है. एक और दफ़ा हम करते हैं तो क्या होता है? दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. लेट्स डू इट वन मोर टाइम. दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. अब अगर हम इसको एक और दफ़ा रोटेट करेंगे, वी विल रीच आर स्टार्टिंग पोजिशन वंस अगैन, राइट? मिस्टर अहमद विल बी इन द स्टार्टिंग पोजिशन वंस अगैन. तो उससे हमें क्या पता चला कि आर दे बीइंग अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर वे all these different times, or are they just moving in a circular arrangement? They're just rotating in a way. They're not being rearranged in any sense. As you can see over here, can you notice same person is sitting next to the same person? Yeah, so they're not being rearranged. So let's try to understand this better. Assume करते हैं कि Mr. Ahmed की family एक सोफ़ा पे बैठी है and they're trying to get a picture taken. ठीक है? Let's say I'm the photographer. और मुझे ना उनकी placement इतनी समझ नहीं आ रही. सो अज्यूम करते हैं कि मिस्टर अहमद सबसे पहले बैठे हैं सोफ़ा पर और एकदम एंड में उनकी बेटी बैठी है. सो इट्स मिस्टर अहमद, हिज वाइफ, हिज 2 sons एंड देन हिज डॉटर. नाउ इफ़ आई टेल हिम टू मूव टू द नेक्स्ट सीट, तो क्या होगा? मिस्टर अहमद विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट सीट एंड बिकॉज देयर इज ओनली लिमिटेड स्पेस ऑन द सोफ़ा, हिज डॉटर हु सिटिंग एट द एंड विल हैव टू कम सिट नेक्स्ट टू हिम, राइट? सो नाउ मिस्टर अहमद्स नेबर्स हैव चेंज्ड, विच मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ दीज 5 पीपल has changed because मैंने एक ही बंदे को चेंज कराया है. अब अगर मैं बोलूँ मिस्टर अहमद नो मुझे आप इधर भी समझ नहीं आ रहे, दोबारा अपनी पोजीशन चेंज करें, तो अब क्या होगा? इट विल बी मिस्टर अहमद, हिज सन, हिज डॉटर नेक्स्ट टू हिम. अब उस डॉटर के नेक्स्ट कौन आ गया? अ डिफरेंट नेबर हैज़ कम नेक्स्ट टू हर, राइट? सो अगर मैं यही करती रहूँ टिल मिस्टर अहमद हैज़ टू कम बैक टू द सेम पोजिशन, वी सी दैट द अरेंजमेंट चेंजेस ईच टाइम हिज सीट चेंजेस. तो अब आप देख सकते हैं कि टू चेंज मिस्टर अहमद सीटिंग पोजीशन पूरी अरेंजमेंट चेंज हो जाती हैं. एंड दीज आर द अरेंजमेंट्स दैट यू कैन सी. दे आर ऑल डिफरेंट. व्हाई? बिकॉज देर आर 2 कॉर्नर्स ऑफ द सोफ़ा. सो मिस्टर अहमद को 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितनी चेंजेस आ गई हमारी अरेंजमेंट में. व्हेयरएज सर्कुलर अरेंजमेंट में आप देख सकते हैं क्योंकि कोई पॉइंट्स नहीं हैं तो जगह चेंज होने में it's only a rotation. It's not changes in the arrangement, right? Starting from one person, we can come back to the other person in the rotation. So if you are to choose a place on a circular table of 6 chairs, you will always have 3 chairs in front, while 1 on the left and 1 on the right. Try sitting on this chair. Again, 3 chairs are facing you, while 2 are on the sides. Since the view is still the same, fixing one position will have 1 less factorial ways of arranging people on 6 positions. That is 6 minus 1 factorial. 5 factorial ways of arranging 6 people in a circular manner. We can generalize this result by saying that if we have n number of distinct objects to be arranged in a circular manner, the total number of permutations will be n minus 1. So in how many ways can a necklace of 8 beads be made? हमारे पास कितने बीड्स हैं उस नेकलेस में? 8. और उसकी अरेंजमेंट भी हम वैसे ही इमेजिन कर सकते हैं जैसे अभी हमने 5 पर्सन्स को ऑन अ सर्कुलर टेबल इमेजिन की थी, राइट? सो लेट्स से हमारे पास बीड्स हैं A, B, C, D, E, F, G, H. तो उनको किस तरह हम सेट कर सकते हैं? तो इन अ सिमिलर वे इन बीड्स की परम्यूटेशन क्या होगी?
It would be 8 minus 1 factorial, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, which would come out to be 7 factorial, right? अब अगर हम इस नेकलेस को देखें, A, B, C, D, E, F, G, H beads, अगर हम A स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं और इसको क्लॉकवाइज टर्न करते हैं, राइट, और दोबारा हम एंटी क्लॉकवाइज टर्न करते हैं, तो हमारी अरेंजमेंट्स तो सेम होंगी, राइट, बिकॉज इट्स अ सर्कुलर अरेंजमेंट. नाउ कैन वी फ्लिप दिस नेकलेस? अब हमें क्या दिखता है कि अगर हम इसको क्लॉकवाइज टर्न करेंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे, तब भी हमारे पास सिमिलर अरेंजमेंट्स आएंगी, राइट. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट व्हेन इट्स अ नेकलेस वी कैन वेयर इट इन वन वे एंड देन वी कैन वेयर इट द अदर वे एज वेल, flipped. So that would give us similar arrangements. Can we do the same with table where people are sitting on it? No, we can't do that. So इस केस में हमें क्या करना होगा? We will have to eliminate similar arrangements from it. जिसका मतलब ये है कि हमने 8 minus 1 factorial divided by the repetitions, which would be 2 factorial in this case, and the answer would be 7 factorial divided by 2 because we have similar arrangements.